महोदय स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्री अभय सिंह जी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आमंत्रित करते हैं। महोदय द्वारा ध्वजारोहण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सन 1947 में आज ही के दिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को प्राप्त करने हेतु हमारे देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस बलिदान की आज देश का प्रत्येक नागरिक तथा आने वाली पीढ़ियां ऋणी रहेंगी। आज हम उन सभी वीर और वीरांगनाओं को चंद पंक्तियों द्वारा स्मरण में नमन करते हैं। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। अधिक समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय आयुक्त महोदय श्री सुखजीत कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण व कर्मचारियों को संबोधित करें। माननीय आयुक्त महोदय। Good morning to all of you. On the auspicious occasion of 76th anniversary of Independence Day, I extend my heartiest greeting to all of you. Today, as we have assembled to celebrate our Independence Day, I feel a great sense of pride and gratitude for whatever our country has accomplished and achieved. This Independence Day is a special one as Azadi Ka Amrit Mahotsav started by Government of India on 12th March 2021 concludes today. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और आज 15 अगस्त 2023 को समाप्त हो रहा है। We all know that Azadi Ka Amrit Mahotsav is being observed to celebrate and commemorate 75th year of independence of India and the glorious history of its people, culture and achievements. The Mahotsav was dedicated to the people of India who have been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey. During last 75 weeks of celebrations, various programs were organized commemorating milestone in India's history and remembering unsung heroes of our freedom struggle, celebrating ideas and ideals that have shaped India.
reinforcing commitment to specific goals and targets, and showcasing evolution and progress across different sectors. 1947 में जब हम आज़ादी हुए तो हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए दुनिया के कई देश आशंकित थे कि हम एक राष्ट्र और एक लोकतंत्र के रूप में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, परंतु प्रगति और विकास के छोटे छोटे कदम उठाते हुए हमने आज सबसे बड़े सफल और जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपने गौरवशाली 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं। Today we are the biggest, most stable and successful democracy in the world. India has carved for itself a very significant and important place in the world geopolitics. In recent years, we have achieved new heights in different fields, especially information technology, automobile sector, defense and space. Successful launch of Chandrayaan testimony to our achievements. On behalf of GST fraternity, I extend my best wishes for successful landing of Chandrayaan 3 on the surface of Moon. India has created new milestone in the export field. We have crossed $760 billion in last financial year, out of which 200 billions were IT exports. Maximum portion was automobile exports, two-wheelers, cars, and around $200 of worth were services were exported. Rousing and warm receptions received by our Prime Minister in his recent visits to USA, Australia, Egypt and UAE, and signing of various bilateral agreements with various countries marks India's presence on global dais and is rising clout in world geopolitics. A lot has been done and a lot has been said since 1947, but we should not forget that still a lot is required to be done so that every citizen has access to healthcare, education and a dignified life. Building a better future for everyone and fostering an equitable and prosperous society is our shared responsibility. On this auspicious day, let us reaffirm our commitment to create our India into a powerful and thriving nation in the world. Now coming to the departmental front, on 1st July this year, we have celebrated 6th year of GST implementation. After crossing many hurdles, the GST regime appears to have stabilized now. Monthly GST collections, which were hovering around 95,000 crore per month till the middle of 2021, are increasing steadily, and now rupees 1,50,000 crore appears to be a new norm. GST revenue collection in last financial year were rupees 16.87 lakh crores. This year up to July, GST collections are 6.7 lakh crores. Looking at the current revenue trends, we are sure that we will achieve new heights in the GST revenue collection. It is a great achievement which has been lauded by Honorable Prime Minister and Finance Minister. We as GST fraternity should be proud of the same. As far as GST revenue of Bhavnagar Commissionerate is concerned, we have recovered 1,961 crores in last financial year, and till today, this year, we have crossed more than 600 crore rupees. I am sure that with the collective efforts by all the officers and staff, our Commissionerate will be able to achieve new heights in all the areas of work. I wish to draw your attention to the greater responsibilities that have been put on our shoulders to achieve our goals and to face challenges thrown at us under the new tax regime. I once again convey my best wishes to all the officers and staff and their family on this Independence Day. अंत में मैं उन सब महापुरुषों को, महानुभावों को जिन्होंने ये दिन हमें दिखाया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनको याद करते हुए नमन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ जय हिंद का उच्चारण करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। महोदय, परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। परेड दाएं मुड़। जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में यहाँ देखिए मैम, यहाँ देखिए। वेरी गुड बेटा, आगे था। वेरी गुड। हल्ले नहीं हो कोई हूँ कहूँ नहीं चाहूँ। आ जाएगा बिल्कुल।